On the occasion of National Youth Day 2022, Vishwa Yuvak Kendra has organized a webinar on the relevance of Swami Vivekananda's principles in the present context. The objective is to make the youth aware of the philosophies and ideals of Swami Vivekananda, focus on the relevance of his views in the present context, and the role that youth can play to achieve it. Let's hear the views and thoughts of our esteemed speakers on the topic. Or from different social media networks. I, on behalf of Vishwa Yuvak Kendra, welcome one and all from the bottom of my heart to this webinar. दोस्तों, आज ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य का दिन है। आज के दिन 12 जनवरी को हम जिस व्यक्तित्व को याद करने के लिए बैठे हुए हैं, वो ऐसा व्यक्तित्व है जिसने अपने समय में भारत की गरिमा को विश्व पटल पर गौरवान्वित किया था। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने भारतीय संस्कृति और सभ्यता और उसके सिद्धांतों को, जिसमें प्रमुखता से अगर नाम लें, सहनशीलता और स्वीकार्यता का संदेश पूरे विश्व पटल पर लोगों को समझाया था। एक ऐसा भारत का सपूत जिसने भारत माता और उसके कण कण के विकास के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। भारत माँ के ऐसे तपस्वी सपूत का जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ, जिन्हें बचपन में नरेंद्रनाथ दत्त के नाम से तथा बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से जाना गया। Namasri Yatirajaya Vivekananda Suraye Satchit Sukha Swarupaya Swamine Tapaharini. I'm extremely happy to participate in the webinar on the topic Relevance of Swami Vivekananda's Principles in the Present Context, organized by the Vishwa Yuvak Kendra to commemorate the birthday of Swami Vivekananda, celebrated all over India as a National Youth Day. My sincere thanks to the organizers for giving this opportunity to address the youth. My regards to the other speakers in the webinar and my dear youth participating in this webinar. I've been asked to speak on the topic Swami Vivekananda's teachings on faith and religion. In the modern parlance, both the terms faith and religion are used synonymously, meaning the religion one person is born in. We normally refer to it saying, I belong to such and such a faith. According to Swami Vivekananda, these two words have two different connotations. Faith refers to Shraddha and religion means Dharma. Shraddha is that faith or inherent firm conviction possessed of which one undertakes certain practices. For example, if one wants to qualify himself as an IAS, he must first possess the conviction that it is possible for him to become an IAS. And from that comes the faith in the means one must pursue, like undergoing a certain course, joining a particular institute, and so on. And then he pursues that. This is faith or Shraddha, which one may possess both with regard to secular as well as religious matters. Religion or Dharma are certain practices a man possessing faith in his inherent divine nature follows in order to manifest the divinity within him. Swami Vivekananda defines religion as manifestation of divinity already in man. Now, going into deeper understanding of these two ideas and what Swami Vivekananda meant by them,
We shall first take up Shraddha, faith in oneself, being ready to face even death in one's pursuit, is what is called as a faith. Swamiji says that all the difference between man and man is owing to the existence or non-existence of faith in oneself. Throughout the history of mankind, if any motive power has been more potent than another in lives of great men and women, it is that of faith in themselves. Born with the consciousness that they were to be great, they became great. Sri Ramakrishna would say that he who thinks himself weak will become weak. Swamiji, when he was in America and Europe, saw their advancement in the material world and physical comforts. And he said that the material power manifested by the Western world was owing to this Shraddha, the power of faith in themselves. He further said that if the West could achieve so much by reposing faith on the muscle power, much greater work could be accomplished by reposing faith in our spiritual nature, the Atman, which is eternal. In one of the conversations with his disciple, Sri Sharat Chandra Chakravarti, who was an orthodox and learned school teacher, appreciated even by Swamiji for his scholarship, we see that Swamiji motivating him to give up his profession as his teacher and go to America, taking up the business of selling Indian clothes to earn more money. Swamiji was very much pained by the poverty and suffering of the masses. Foreigners were taking away the resources and raw materials from our country and manufacturing finished products using their intelligence and selling them back to us in amassing wealth. We, in spite of possessing learning, were working like slaves looking for employment under them. Such was the pitiable condition of our people. Swamiji's love for our country was so great that he asked his orthodox disciple to give up even all religious observances and enter into the struggle of existence. There, he invokes faith in the disciple, saying, "We are the children of the Almighty. We are the sparks of the infinite, divine power, divine fire. How can you be nothings? We are everything, ready to do everything. We can do everything. The man must do everything." Mahatma Gandhi was an ordinary person who stood up against the British Empire. He led hundreds of millions of Indians to demand freedom from the most powerful British rule, which ruled more than half of the world and helped India achieve independence. Such was the self-belief in him that Gandhiji was born an ordinary person, became a Mahatma. Swamiji would emphasize that we should not forget our mission in life. Spirituality is the backbone of our country. Our role in the world stage is that of spiritual teachers. This, he said, we should not forget. He wanted that we should learn arts and sciences from the West and in turn teach religion to them. It does not mean that everyone should become a monk. Now, coming to religion, as stated in the beginning, religion means dharma. Etymologically, dharma means that which is the essential nature of a thing, which upholds a thing, like fire and its burning power. You take away the burning power, it is no more a fire. Man also has an essential nature that upholds his existence as something distinct from the rest of the creation. What is the essential nature of man? It is the power of becoming divine that marks out man from all other beings. This power is called as Manava Dharma. In the famous Sanskrit book of fables, Hitopadesha, we get Ahara Nidra
bhayamaitunancha, samanyam etat pashubhir naranam, dharmo hi tesham adhiko visesho, dharmena hina pashubhis samana, ahara, food, nidra, sleep, bhaya, fear, maithuna, progeny, samanyam. These are common. All these are common to both animal and men. Dharma is something which is special in man, which differentiates it from other beings. And a man devoid of this dharma is nothing but an animal. We are all born men. Divinity is already present inherently within us, but we need to manifest this divinity. What then are the obstacles which obstruct this its manifestation? They are the Shad Ripus, 6 enemies. What are they? Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mada, Matsyara. Kama, desire or lust. Krodha, anger. Lobha, greed. Moha is delusion or false understanding. Mada is egotism. Matsyara, jealousy. Where do they reside? In the mind. So long they are there, more powerful, so long as they are more powerful and hold our minds in sway, we remain brutes. The power to purify the mind is also inherent in us. As men, we are born with the power of removing all the impurities of mind and become divine in all our behavior and activities. Those who succeed in cleansing their minds thoroughly and bring out divinity within them are real men, perfect men. Swami Vivekananda says, each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity within by controlling nature, external and internal. Do this either by work or worship or psychic control or philosophy, by one or more or all of these, and be free. This is the whole of religion. Doctrines or dogmas or rituals or books or temples or forms are but secondary details. The means for manifesting the divinity can be divided into 4 types. They are the 4 yogas. Karma yoga, through selfless work, one cleanses the mind and the inherent divinity becomes manifest. Bhakti yoga, through worship and prayers, one attains union with God. Raja yoga is psychology, study of mind, and by controlling it through the practice of Ashtanga yoga, one merges into the Paramatma. Jnana yoga is a philosophy. Through intellectual reasoning, one negates the reality of this mind and body and finally merges into the absolute reality by realizing the oneness of individual self with the Supreme Self. This constitutes the whole of religion. Now, what is the purpose of religion? Can religion really accomplish anything? Yes, it can. According to Swami Vivekananda, it brings to man eternal life. It has made man what he is and will make of him, this human animal, a god. That is what religion can do. Take away religion from human society, and what will remain? Nothing but a forest of brutes, since happiness is not the goal of humanity. Wisdom is the goal of all life. We find that man enjoys his intellect more than the animal enjoys its senses. And we see that man enjoys his spiritual nature even more than his rational nature. So the highest wisdom must be the spiritual knowledge. With this knowledge will come bliss. All these things of this world are but shadows, the manifestations, the 3rd or 4th degree of the real knowledge and bliss. This is what Swami Vivekananda says.
Swami Vivekananda is one of the important contribution is to obliterate the distinction between the sacred and the secular. For Swami Vivekananda, religion is not merely a special type of activity like worship, prayer, meditation, etc., which are done at a certain periods of time of the day. Though these practices are important, religion involves a person's total life. Religion is unfoldment of divinity within. Every activity that helps this unfoldment is religion. As Sister Nivedita puts it beautifully in the introduction to the complete works of Swami Vivekananda, she says, no distinction henceforth between sacred and secular. To labor is to pray, to conquer is to renounce. Life itself is religion. Swamiji, the workshop, the study, the farmyard, the field are as true and fit scenes for meeting God with man as the cell of a monk or the door of the temple. To him, there is no difference between service of man and worship of God. However, it should be clearly understood that non-distinction from secular and spiritual does not mean totally giving up all sacred from life, which is secularization of life. It actually means deification of human life, divinizing all our activities or spiritualizing of one's whole life, as the Ishopanishad puts it, Isha vasyam idam sarvam yatkincha jagatyam jagat tera tyaktena punjita. Cover up whatever exists here with the divine. By giving up this non-existent world, enjoy the bliss of divine existence. Another interesting topic which Swamiji would speak about is the idea of universal religion and harmony of religions. According to Swami Vivekananda, direct realization of divinity within as the ultimate reality is the essence and goal of all religions. Ideal and the methods of realizing this may differ. He gives the analogy of a circle. There may be 1,000 radii, but they all converge to one center. There never existed many religions as my religion or yours. There is only one religion, one infinite religion that exists all eternity, is expressing itself under various environments in different ways. In the phenomenal world, religion will show great diversity. This is so because in the physical plane, religion is identified with customs, rituals, holy books, mythologies, and places of worship. To bring about a harmony among various diverse factors is one of the biggest challenges faced by the humanity. According to Swamiji, the differences among religions would not be the cause of conflict if we understand them to be mutually complementary. Every religion is only a variation of one eternal religion. Every one of them arose to fulfill certain needs of the humanity. Each one has a specific role to play in the universal scheme of life. Every religion has certain good features which is unique to it. For instance, the good point of Islam is its spirit of equality and brotherhood. That of Christianity is a spirit of love and service. That of Buddhism is its emphasis on renunciation and rationality. The good point of Hinduism is a doctrine of the one self, the Atman. Its emphasis on experience and universal toleration. Finally, we conclude stating man's essential nature is divine, and having faith in that, one should take to the practice of religion to realize that inherent divinity
and manifest it in every moment of life. This is the goal of human birth, according to Swami Vivekananda. Thank you very much. Om Shanti 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 Harihi Om Tat Sat Shri Ramakrishna Arpanamastu. अभी स्वामी नित्य दीपानंद जी ने जो बातें कही और बाद में प्रोफेसर पमिला सिंगला जी जो बातें कहेंगी, उस बीच में मैं आपके सामने स्वामी विवेकानंद के सामाजिक चिंतन के बारे में कुछ बातें रखूंगा. Today, in terms of social questions, we have four major issues before us, which make us to go to Swami Vivekananda's thought process to understand what was his understanding and what was his approach to these four major social questions before us. First and foremost is the question of untouchability and caste system. जाति व्यवस्था के बारे में स्वामी जी, छुआछूत के बारे में स्वामी जी क्या सोचते थे. Second question was the relationship between two major religions, Hindus and Muslims in modern India. स्वामी जी का हिंदू और मुसलमानों के बारे में, इस्लाम के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में क्या विचार था और उनके संबंधों के बारे में उनका क्या चिंतन था. Religion in our life. The third theme was relation between classes and masses. Like many societies, India also had a small section, very affluent, well educated, very privileged, and a very large number of people who were resourceless, very poor, suffering with a variety of handicaps, including health issues, employment issues, and other very, very basic minimum needs fulfillment. Classes and masses. आम लोग और विशिष्ट लोगों के बीच में क्या संबंध. And the fourth question was emerging in the time of Swami Vivekananda, and that was status of women in India. आपको मालूम है कि स्वामी विवेकानंद के समय में कुछ सामाजिक सुधार हुए थे महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए, लेकिन बाल विवाह, विधवा विवाह न करने की अनुमति और स्त्रियों की शिक्षा का सवाल, रोजगार का सवाल, नर नारी के बीच के संबंधों का सवाल, इसके बारे में बहुत कठोर नियम थे स्त्रियों को दूसरे दर्जे का नागरिक बना के रखने का. और आज इन चारों सवालों से भारत अभी भी जूझ रहा है. भारत की महिलाएं कुल एक चीज मांग रही हैं, हमें हिंसा से मुक्ति दिलाओ. प्लीज गिव अस अ लाइफ ऑफ डिग्निटी, मेक अस फ्री फ्रॉम द फियर ऑफ वायलेंस, violence within homes, violence in public places, and helplessness of women in facing violence. जाति के सवाल पर हम जानते हैं कि हमारे संविधान ने कुछ दवा दी है, लेकिन सब ये भी जानते हैं कि हम जितनी दवा कर रहे हैं जाति के बारे में, ये बीमारी उतनी ही बढ़ती जा रही है. Caste is refusing to go away, and the victimhood of Dalits, the condition of ordinary men and women coming from former untouchable communities, is still very pathetic. हिंदू और मुसलमान के संबंधों के बारे में स्वामी जी के जाने के कोई 45 साल बाद
अंग्रेजों की हरकतों के कारण, कुछ सांप्रदायिक संगठनों के कारण, हिंदुओं और मुसलमानों के, भारत का बंटवारा हुआ, कई लाख लोग मारे गए, लगभग 2 करोड़ लोग पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, सिंध, पंजाब और बाकी भारत में, और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात से आज के पाकिस्तान में जाने को मजबूर हुए। और फिर भी हिंदू मुसलमान का सवाल हर 10 साल 15 साल के बीच में एक बार सिर उठाता है और देश घबरा जाता है। नो, he was a very enlightened modern mind who had traveled around the country and had seen realities of Indian life through his own eyes. And he had the same very strong criticism of the attitude of men and women from upper caste. And he said that you have reduced the meaning of religion into cooking of food. आपने धर्म को चूल्हे में बंद कर दिया। इसको मत छुओ, उसको मत खाओ, उसको लाओ, उसको छोड़ो। And he argued against this reducing of very pure resource of human life, that is spirituality, to a very mundane part of our existence, cooking of food. आध्यात्मिकता और धर्म का अर्थ सेवा है, समन्वय है, सहयोग है, छुआछूत नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि आज हम देख रहे हैं इतिहास की गति। मैं इस पूरे भारत को बताना चाहता हूं कि इस समय दुनिया में वैश्यों का राज्य है। वो ब्रिटिश शासन को व्यापारियों का शासन कहते थे, और था भी ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए शुरू हुआ था। लेकिन उनका दुनिया जैसे बदल रही है, आने वाले समय में शूद्रों का राज्य होगा। He also looked at the Hindu-Muslim question. उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में आध्यात्मिक एकता का दर्शन है, सभी जीव ईश्वर का अंश हैं। All sentient beings are a reflection of the glory of God. ये तो हमारा आध्यात्मिक चिंतन है। हमारी समाज व्यवस्था में कौन किसके कितने दूर रहेगा, कौन किसके कितने पास रहेगा, lot of unfounded grounds for creating barriers of social interaction. तो भारत का भविष्य अगर सुंदर बनाना है तो धर्मों के विवादों से ऊपर उठ करके हमें वैदांतिक मन, मस्तिष्क और इस्लामिक सामाजिक ढांचा चाहिए। We need to create Vedantic mind and Islamic body to make a better tomorrow. Parliament of World Religions at Chicago. तो आज मैं आपसे कहूंगा कि जो उनका शिकागो का भाषण है उसको कभी जरूर पढ़िएगा, वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। उनका जो धर्म के बारे में सोच था, उसके बारे में, भारतीयता के बारे में जो सोच था। तीसरी बात उन्होंने समाज के अंदर संपन्न और विपन्न लोगों के बीच के संबंधों के बारे में कही, सामाजिक आर्थिक विषमता के बारे में। उन्होंने कहा कि समाज कौन बनाता है, कौन समाज का प्रवक्ता प्रतिनिधि है। ये महलों में रहने वाले मुट्ठी भर राजा, नवाब, जमींदार, या खेत में हल चलाने वाला किसान, कारखाने में काम करने वाला मजदूर, श्रमजीवी या परजीवी। और स्वामी जी ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि भारत का निर्माण, भारत की अस्मिता, भारत की पहचान इसके विराट श्रमिक समाज से है, किसानों से है, मजदूरों से है। चौथी बात थी महिलाओं के बारे में। ये वो समय था जब महिलाओं में साक्षरता 1% भी नहीं थी। जैसा कहा अजीत जी ने, उदय जी ने, 1863 में उनका जन्म हुआ था और भारत का पहला सेंसस 1872 में हुआ था। आप उन आंकड़ों को देखिएगा। महिला शिक्षा अपने आप में एक असंभव काम था।
महिलाएं पर्दे में रखी जाती थी। और स्वामी जी ने कहा कि हम चाहेंगे कि शिक्षा का प्रसार सब में हो। शिक्षा ही भारत की मुक्ति का रास्ता है, मर्दों के लिए भी, औरतों के लिए भी। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि जिन विधवाओं को आपने त्याज्य कर दिया है, मैं उन विधवा बहनों को शिक्षिका के रूप में बना करके भारत के गांव-गांव की स्त्रियों की शिक्षा के लिए जुटाना चाहूंगा। आज भी रामकृष्ण मिशन का एक बड़ा योगदान शिक्षा का योगदान। I suggest you to read a small book which is collection of his lectures which he gave after returning from Chicago and America, and it's called From Colombo to Almora. So I suggest Ajit ji and Uday ji to recommend my friends who are very eagerly trying to understand the importance of Swami Vivekananda and why his birthday is celebrated as Youth Day in our country, by advising them to look at his ideas, his contributions, and we can start with this beautiful collection of his lectures, which gave him great recognition in the country also, and it's called From Colombo to Almora. Thank you very much. और जैसे कि हम जानते हैं कि आज हम बहुत एक महत्वपूर्ण दिन पे इकट्ठे हुए हैं, and that is the birth anniversary of Swami Vivekananda, जिनको कि इस देश ने एक यूथ आइकन के रूप में देखा है। और इसके बारे में अभी हमारे पहले वक्ताओं ने भी बोला, और मुझे कहा गया कि टीचिंग्स ऑफ स्वामी विवेकानंद फॉर द यूथ, उनकी टीचिंग से हमारे जो यूथ है वो क्या सीख सकते हैं, उनके ऊपर कुछ मुझे रोशनी डालनी है। और डेफिनेटली ये बात तो है कि the government felt that the philosophy of the Swami and the ideals for which he lived and worked could be a great source of inspiration for the youth of the country. उनकी जिंदगी से हमारे युवाओं को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और इसलिए ये भी एक अपॉर्चुनिटी है, ये भी एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम उनके बारे में बात करें। जैसा कि कहा गया, he died at a very early age, he died at a very young age, और प्रोफेसर अनंत कुमार ने तो बहुत ही खूबसूरती से बताया that possibly that was one of the reasons his early death, that probably could have been lacking somewhere. He spoke about 3 aspects, and one of them was that he died at a very young age. But अगर हम देखें 39 years of age, और उन्होंने इतना कुछ हासिल किया उसमें, that it's really not possible to believe that he died at such young age. So much of work has been done by him in such a short span of time. और कहीं ना कहीं मुझे लगता है, जैसे इनके बारे में अगर हम बात करें, कल्पना चावला भी उसी उसमें आते हैं, they are people like trailblazers. ये लोग वो है जो आते हैं और थोड़े ही समय में एक इतनी बड़ी छाप छोड़ जाते हैं, that it is actually one wonders that how did they do that? And Swami Vivekananda actually left strong footprints in such a short span of time. This is the monk who traveled length and breadth of the country, जैसे कि Professor Anand Kumar ने भी बोला, he traveled length and breadth of the country before he reached the tip of Kanyakumari, जहाँ उन्होंने अपनी पूरी जर्नी संपन्न की, जहाँ पूरी यात्रा उन्होंने अपनी समाप्त की। और बेसिकली इन्होंने ये ट्रेवल इसलिए किया because he wanted to know the state of the country. He speaks about degradation, he speaks about poverty, he speaks about suffering, and he really wanted to see that from his own eyes, that what exactly is the situation. और वो पूरा ट्रेवल करते हुए यहाँ जब आए तो 3 दिन 3 रात उन्होंने उस पत्थर पे, उन्होंने रॉक पे उन्होंने मेडिटेट किया, and he got enlightened. This points at a very important aspect. So जो हमारे युवा हैं तो उनके लिए मैं कहूँगी कि इस चीज से एक बहुत important चीज निकल के आई है, that whatever you do and whatever you say, it should be based on facts and figures and not on impressions. कि अगर
जब उनको कहा गया कि सफरिंग है, दिस इज द स्टेट ऑफ अफेयर्स, दैट देयर इज टोटल डिग्रेडेशन, instead of believing or taking it from others' views, he preferred to travel the entire country to actually know what exactly was the situation. So this points at this very important aspect that we should not go by impressions, but it's important that we base our opinion on facts and figures that we have. So it's important that the policies of the country, where youth along with other stakeholders have a very important role to play, should not be framed in vacuum, but it should be based on facts. His very being is a representation of his want to address the poor of the country. And जैसे कि अभी कहा गया कि उनका पूरा का पूरा जो ये निचोड़ है वो उन्होंने शिकागो at the Parliament of Religions में he spoke about it. स्वामी विवेकानंद की कुछ बातें जो मुझे स्ट्राइक की, and I thought they would definitely be beneficial for the youngsters or youth of the country is another one is that he spoke about, he called upon the youth to build up their mental energies as well as their physical energies, which was important then when he spoke about it, and it's important even today after 75 years of independence. He said, उन्होंने कहा that all good work has to go through 3 stages. अगर मैं इनकी इस बात को देखूं, that we have to build up, the youth has to build up their mental and physical energies. And he said that all good work has to go through 3 stages. The 3 stages are, first is the ridicule, second is opposition, and third comes acceptance. कहने का मतलब ये है कि पहले उपहास, विरोध और फिर स्वीकृति, और ये तीनों स्टेजेस हर एक काम पे आएंगी, और हम उससे, कहने का मतलब ये है कि हमें उससे घबराना नहीं है, और ये तभी हो सकता है जब हमारी जो जिस काम के बारे में हम वार्तालाप कर रहे हैं, जिस काम को हम पुट क्रॉस कर रहे हैं, that work is with our own conviction. अगर हम किसी और की विचारधारा को आगे रखते हैं, then definitely we might just fall at the first stage itself, that is the ridicule and opposition. So it's very important that we really need to build up our mental energies. We need to put across our own viewpoint, और किसी और की विचारधारा को हम आगे ना रखें. It's also important for us to know and see that there is no fun in a patterned behavior. अगर जिंदगी में एक पैटर्न हो तो उसमें कोई मजा नहीं है. Life has to be non-pattern to some extent for people to enjoy it and for people to live it their way, and for people to work hard to attain their capacities. Somewhere the road less traveled should be also explored. The Swami spoke about focus of life, and this is the essence of life. Something that really struck me. He says, take up one idea. It might sound very simple. कहीं ना कहीं लगता है कि बहुत simple चीज है, but अगर आप देखें तो बहुत ही जरूरी चीज उन्होंने बोली. Take up one idea, make that one idea your life. Dream of it, think of it, live on that idea. Let the brain, body, muscles, nerves, every part of your body be full of that idea, and just leave other ideas alone. This is the way to success, and this is the way great spiritual giants are produced. So the point is that every person, every youth should take up their own ideals, their own goals, and endeavor to accomplish it. That is a surer way of progress rather than taking other men's ideals, which he can never hope to accomplish. Also, it's very important, while I say so, I think it's very important for me to also say that one should not judge people one against the other, as everyone is different, and we speak of diversity. So it's very important, जिसे हम अपने social work के discipline में भी बात करते हैं, it's very important that we respect human dignity, we respect diversity, and we accept people as they are. So when we talk about rights, अगर आज की हम बात करें, हम ज्यादातर हम देखते हैं कि हमारे जो युवा लोग हैं वो rights के बारे में बात करते हैं. कहीं ना कहीं duties कहीं ना कहीं गुम हो गई है. Swami Vivekananda spoke about duty and about the universal idea about duty. और एक बहुत ही fine duties, जिसे मैं कहती हूँ, एक बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बोली. Our first duty is not to hate but love ourselves. ये हमारे
यूथ को जानना बहुत जरूरी है कि हमारी फर्स्ट जो हमारी ड्यूटी है वो दूसरों की तरफ नहीं है, वो हमारे अपनी तरफ है, और बहुत जरूरी है that we need to love ourselves, our own being, because to advance we must have faith in ourselves first and then God. And somewhere he also spoke about this aspect which we find being mentioned very often, that is, talk to yourself once a day, otherwise you may miss meeting an intelligent person in this world. So बहुत जरूरी चीजें हैं that we start respecting ourselves, we start accepting ourselves, and we talk to ourselves at least once a day. He is remembered as a great preacher of karma. He spoke about Gita, he spoke about non-resistance, he was a karma yogi. और उनका जो एक there's a complete work on Swami Vivekananda. I was going through it. Page number 40 पे, volume 1, he narrates about a conversation with a man, because मैं इस context में कर रही हूँ that he was a karma yogi, he believed in karma. तो उनका एक conversation है with a person whom he knew him as a dull and lazy person, and a person who had no desire to know anything. स्वामी जी ने उनसे पूछा एक बार, if he had ever told a lie, आपने कभी झूठ बोला है? To which that person said no. The Swami then tells him that you're too dull, you want to do something wicked. So what he tried to arrive was that a man must be active in order to pass through activity to perform or to attain that calmness. I thought that was something very important and beautifully said. So inactivity should be avoided by all means. He spoke about resist all evils and hate nobody. I've loved his mind when he says, fulfill your desire for power. I think our youth really needs to know about it. Fulfill your desire for power and everything else. And after you have fulfilled the desire, will come the time when you will know that they are all very little things. एक और उन्होंने बात बोली, जो अभी हम जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी अपनी देख रहे हैं उसमें भी निकल के आई है, और बीच बीच में हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी ये बात निकल के आती है. Which he said was, as we know that he was a disciple of Ramakrishna Paramahansa and the founder of Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission, he was fearless, courageous and positive. And he said, education is not the amount of information that is put to your brain and runs roids there, undigested all your life. We must have life building, man making, character making, assimilation of ideas. I think something beautifully said. And यही चीज हम अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में देख रहे हैं, where the focus is that what education is not just learning by rote. Here is that it's important that the youth participation is made more meaningful and they feel comfortable collaborating with the various stakeholders who are involved in the entire process. यहीं मैं अपने पूरी बातचीत को यहाँ खत्म करना चाहूंगी. And before I conclude, I would once again express my appreciation for Vishwa Yuvak Kendra. ये समझना बहुत आवश्यक है, अनिवार्य है भारत के युवा पीढ़ी को कि भारत ने जो भारत की यात्रा है, मैं मानता हूं, मैं अनादिकाल से चल रही है. भारतवर्ष की यात्रा अनादिकाल से चल रही है, अनंत काल तक रहेगी. इसको मैं महायज्ञ मानता हूं. और इस महायज्ञ में तभी सफलता मिलती है, कुछ फल, कुछ सिद्ध होता है जब इसमें आहुति दी जाए. और उस आहुति को देने के लिए भारत के तमाम ऐसे संतान आए जो अपने जीवन से, उदाहरण से आहुति देते गए हैं, जिससे ये परंपरा कायम रही है, भारत की यात्रा बरकरार रही है. उसी श्रृंखला में परंपरा को धरोहर के रूप में हमें आगे बढ़ाते हुए स्वामी विवेकानंद भी थे. अक्सर मैं देखता हूं, जब भी कोई मुझे समूह मिलता है युवकों का जो विवेकानंद से प्रेरित है, प्रभावित है,
तो वो उनके मन में कुछ अध्यात्म को लेकर है, और मुझे इसका कष्ट होता है कि वो अध्यात्म को कोई, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट चीज, मानते हैं कि ये कोई एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है और उससे हमें जुड़ने के लिए सब कुछ त्याग देना होगा, संन्यास ले लेना होगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। तो मुझे कबीर याद आते हैं। मैं नहीं जानता कि स्वामी जी ने कबीर के बारे में क्या कहा है, पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उन्होंने कबीर के बारे में बहुत कुछ कहा होगा, सोचा होगा। कबीर ने इतने स्पष्ट रूप से कहा था अपने ध्येय के संदर्भ में कि अगर तुम्हारा जो भी ध्येय है, अगर उसको पाना है, उसमें सफल होना है, तो सबसे बड़ी चीज क्या है, सबसे आवश्यक क्या है? माला कहे काट की। अक्सर आप देखते हैं लोग माला जपते हैं, वो ऊपर वाले से जुड़ना चाहते हैं, वही उनका ध्येय है। तो माला कहे काट की तू क्यों फेरे मोए, मन का फेर ले तुरंत मिला दूं तोय। तो ये मन के विचार अपने अंदर आत्मशुद्धि ले आओ। और वो आत्मशुद्धि कैसे आती है, थोड़ा भी गौर करें अगर हम स्वामी जी की ओर, तो हमें समझ में आ जाएगा। उन्होंने कभी किसी को, जहां तक मैं जानता हूं, बाधा नहीं कि तुम सब कुछ छोड़ के आओ और विवेकानंद रॉक पे चले जाओ, कन्याकुमारी में 3 दिन वहां अध्ययन करो, समाधि ले लो, ये ले लो। वो किसी और के लिए नहीं उन्होंने कहा था, वो तो उनका अपना जीवन था, किसी और को उन्होंने बाध्य नहीं किया था। बल्कि जहां तक मुझे मालूम है, प्रोफेसर आनंद जी इसको ज्यादा गहराई से जानते हैं, कुछ युवक एक बार उनके पास पहुंचे थे कि हम भी आध्यात्मिक बनना चाहते हैं, ये है वो है। तो उन्होंने कुछ हल्के डांटते हुए ही उनसे कहा था कि तुम्हारा काम है जाके फुटबॉल के मैदान में फुटबॉल खेलो और अपने शरीर को मजबूत बनाओ, मन को मजबूत बनाओ। और वाकई अगर आपको स्वामी जी के जीवन से कुछ लेना है, और अगर नहीं लोगे तो यह भारत के सही सपूत नहीं होगे तुम लोग। भारत को समझने के लिए ये कोई एब्स्ट्रैक्ट गुफा में बैठकर और अध्ययन करके करोगे तो नहीं भारत समझ में आएगा। और चाहते हो कि भारत का हित हो तो भारत का दर्शन करो। शंकराचार्य ने भी किया था, विवेकानंद ने किया था, महात्मा गांधी ने किया था। जिन लोगों ने भी भारत के हित के लिए सोचा है, उनके मन में चिंता रही कि भारत को पहले पहचान तो लें, समझ तो लें। तो भारत से जुड़ना बहुत जरूरी है। और मैं युवा पीढ़ी से यही कहूंगा, कोई भी तरीका अपनाओ। आज तो इतना सरल कर दिया है टेक्नोलॉजी ने कि इंटरनेट के माध्यम से ही आप भारत से बहुत तरीकों से जुड़ सकते हैं। भले भारत पूर्ण रूप से न समझ में आए, और नहीं आएगा किसी को भी नहीं, ये भारतवर्ष है, ये किसी एक के बस का नहीं है। लेकिन जितना समझ लो उतना अच्छा है। तो इंटरनेट से ही समझ लो। मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि विवेकानंद ने जब भारत का भ्रमण किया पहली बार, तो अपने साथ 2 पुस्तक ले गए थे। वो एक ईसा मसीह पे थी और दूसरी भगवत गीता थी। और भगवत गीता में उनको जो बहुत प्रिय था, श्री कृष्ण का एक उपदेश अर्जुन को कि ईश्वर हर चीज में बसता है, सब बराबर है, हर चीज में बसता है। और उसी गीता के साथ उन्होंने भारत दर्शन किया था। 2 ही पुस्तक थी, गीता हमेशा पढ़ते रहते थे, गीता पे बहुत टिप्पणी की है उन्होंने। और वहां से उनको क्या प्रिय था, श्री कृष्ण का यह उपदेश कि हर किसी में ईश्वर बसता है, सब कुछ ईश्वर है, ईश्वर ही है तुम्हारे सामने, तुम भी ईश्वर हो, तो तुम एक हो, सब एक है। तो तुम अपनी हानि तो कभी करोगे नहीं, क्योंकि अपनी हानि कौन करेगा, आत्महत्या करेगा। जब वो सामने भी तुम्हारे वही है, तुम ही हो, तो उसकी भी हानि नहीं करोगे, उसका हित चाहोगे, यानी कि सबका हित करो। कबीर ने भी यही कहा था, संतन के मन रहत है सबके हित की बात, घट घट देखें अलख को पूछें जात न पात। कि सबके हित की बात करना है तुम्हें, क्योंकि उसी में तुम्हारा हित है।
तो आप इसको समझिए, हम में से कितने लोग हैं जो औरों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करते हैं, जात पात में नहीं उलझे हैं। सोचने की बात है। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, और विवेकानंद इस पे कई बार टिप्पणी कर चुके हैं, कि कहते हैं कि मुझे तो वह ज्ञानी है, उसको मैं प्रिय मानता हूं, उसको मैं योगी मानता हूं, जो ज्ञानी ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और कुत्ते को खाने वाले में कोई भेदभाव न करे, कोई अंतर न जाए। तो अगर तुम चाहते हो, और मैं युवकों को यहां पर संबोधित कर रहा हूं, वाकई चाहते हो कि तुम ऋण चुकाओ इन महान हस्तियों का, विवेकानंद का, शंकराचार्य का, महात्मा गांधी का, तो तुम्हें ये अपना धर्म बनाना है। क्या धर्म? ये नहीं कि हिंदू या मुस्लिम, इस चक्कर में पड़ना ही मत। श्री कृष्ण ने कहीं नहीं कहा है कि तुम इस तरह से धर्म निभाओ कि तुम ये हो या वो हो। कहते हैं कि जिस प्रकार से भी पूजा करोगे निष्ठा से करो, तो मेरे पास ही आओगे या उस ईश्वर के पास जाओगे। कहते हैं, ये भी नहीं कहते मेरे पास, उस ईश्वर के पास जाओगे जिसको तुम मानते हो। जिसको तुम मानते हो वही तुम्हारा ईश्वर। तो मानो, तुम राष्ट्र को मानो, भारतवर्ष को मानो अपना ध्येय, अपना लक्ष्य, तो निष्ठा से लग जाओ। और तब ये मत देखना कि ये ऊंची जात का है कि दक्षिण का है, कि अंग्रेजी बोलता है, कि वेशभूषा क्या है। उसको अपना जैसा मानो, अपने से जुड़ जाओ, उसके अंदर लीन हो जाओ, तुम्हें रास्ते मिल जाएंगे। और मैंने तो देखा है कि विवेकानंद ने जब भ्रमण किया भारत का, तो उन्होंने क्या एक ही मंत्र दिया है युवा पीढ़ी के लिए। क्या मंत्र है? यही था, आई शैल होल्ड ईच वन ऑफ यू ट्रेटर। मैं हर किसी को मानूंगा कि गद्दार है, जब तक भारतवर्ष में एक व्यक्ति भी भूखा होगा तो उस भूख को मिटाने का प्रयास करो। गांधी जी ने भी यही कहा था कि जब तुम्हारे अंदर विडंबनाएं उत्पन्न हो जाए, संदेह पैदा हो जाए, मार्ग न तय हो रहा हो, जब तुम्हारा अपना जो है अहंकार की भावना बढ़ जाए, तो आंखें बंद करके परिकल्पना करो उस व्यक्ति की जिसको तुमने जीवन में देखा है, जो सबसे गरीब है, सबसे दबा हुआ है, और तब पूछो कि मैं जो कार्य करने की सोच रहा हूं उसमें उसका हित है कि नहीं है। और तुम्हारी सारी शंकाएं अपने आप हट जाएंगी। सूर्य की किरण का प्रकाश आ जाएगा मार्ग बताने के लिए। वही विवेकानंद ने करके भी दिखाया। तो भूख मिटाने का ये मतलब नहीं था उनका, ये भी एक है कि हाँ, खाना लेके जिसको दे सकते हो दो, भोजन दो, जितना दे सकते हो, अपने कम खाओ। परंतु उसका एक बड़ा गहरा अर्थ है, बहुत ही गहरा, जो स्वामी जी कहना चाहते थे। और मैं दावे के साथ कहता, मुझे सौभाग्य नहीं रहा कि मैं उनके कर कमलों में बैठकर कुछ सीखता। गांधी जी भी गए थे उनसे सीखने। दुर्भाग्य की बात है उस समय उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, गांधी जी नहीं मिल सके। मैं बार बार इस पे सोच चुका हूं कि अगर गांधी जी रहते, उनसे बातचीत होती, तो शायद भारत को और पहले आजादी मिल जाती, कुछ जरूर पाते वो स्वामी जी से। परंतु कोई बात नहीं। जब वो कहते हैं कि किसी को भूखा नहीं होना चाहिए, तो मैं युवा पीढ़ी से कहना चाहता हूं, ये समझ लो कि अपना हित चाहते हो तो भारत का हित करो, और भारत का हित चाहते हो तो विवेकानंद की बातें याद करो और उनको धरती पर उतारो व्यवहारिक तौर से। डॉक्टर प्रकाश चंद्र जी का एक अच्छा सा प्रश्न है सर। उन्होंने, उनके प्रश्न को मैं हूबहू ऐसे ही पढ़ रहा हूं जो उन्होंने लिखा है। स्वामी जी को सदैव ही युवाओं के प्रेरणा स्रोत के रूप में देखा गया है, किंतु वर्तमान परिदृश्य में जिस प्रकार से हमारे महापुरुषों को विभिन्न जातियों, पार्टियों के आधार पर बनी विचारधाराओं के आधार पर बांटा जाता है, जैसे दलितों के अंबेडकर, समाजवादियों के लोहिया, जेपी, भाजपा के दीनदयाल, कांग्रेसियों के महात्मा गांधी, ऐसे में आज की नई युवा पीढ़ी को इतिहास में अपनी जगह बनाने वाले महापुरुषों और विचारकों के विचारों के समन्वय से निकले प्रगतिवादी विचारों के साथ कैसे जोड़ा जाए
और आज के युवाओं को इस संकीर्ण मानसिकता से निकालकर कैसे समाज एवं राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित किया जाए, ये मेरी पीड़ा भी है और जिज्ञासा भी है। कृपया इस पे मार्गदर्शन करें। To go back to the first such thinker, Swami Vivekananda, because he made his contribution between 1880 and 90s, the last 2 decades of the 19th century. You must look at the work which is being performed by Ramakrishna Mission today, where there is not much of ideological barrier, religious or cultural barrier. It's a universal humanism anchored in the philosophical system of India called Vedanta or Advaita. Non-dualism, that we are all one. But how do we practice this oneness? By serving the needy. Serving the needy is many dimensional process, from educating an illiterate child to helping a handicapped man or woman, restoring confidence of a victim of violence, and of course contributing to constructive work in our society. सर, एक प्रश्न मिस गीतिका ने पूछा है, स्वामी जी has said it is easier to understand Gita through a game of football than through study of it. How can you explain? There he again, he went after his travel throughout India during his Parivrajaka days before he went for the US. He saw and sitting in the last rock of Kanyakumari, he was meditating upon India, and he was meditating upon the ancient glory of India. And because of thousands of years of slavery, India had lost its physical strength and the mental strength. And because of the exploitation of the invaders, and in order to get over this physical weakness, he enthused the people that they should be more physically strong to understand the religious philosophy, the spiritual truths. ये गैलेक्सी ऑफ स्पीकर्स जिन्होंने सनातन संस्कृति के संदेश वाहक स्वामी विवेकानंद जी के जन्मोत्सव को इतना चार चांद लगा दिए, हम विश्व केंद्र प्रांगण की तरफ से हम आभार व्यक्त करते हैं। विवेकानंद जी का केवल एक सेंटेंस में रखते हुए बात को रखना चाहूंगा कि उन्होंने जब पार्लियामेंट में शिकागो में ऐसे ही ताली नहीं बजी थी, उन्होंने जब बताया, सभी धर्मावलंबी जब बता रहे थे कि हमारा धर्म ऐसे श्रेष्ठ है, हमारा धर्म उनसे श्रेष्ठ है, उन्होंने एक सेंटेंस कहा था कि आई एम प्राउड टू बिलोंग टू ए रिलीजन व्हिच हैज टॉट बोथ टॉलरेंस एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। ये अपने आप में एक सेंटेंस एक पूरी इबादत लिख सकती है, पूरी कहानी लिख सकती है। तो और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि उस देश के हम वासी हैं जहां पर स्वामी विवेकानंद जी जैसे अवतार पुरुष ने जन्म लिया और 39 वर्ष की अपनी अल्प आयु में उन्होंने पूरे देश दुनिया में अध्यात्म को एक नई ऊंचाई दे दी है। Thanks for watching. For more updates, please subscribe to our official YouTube channel and follow us here.